delighted and excited to be able to listen to the Honorable Minister, sir. I'll just spend a minute on the title, of course. I'm doing colonial infrastructure towards global indigenous resurgence. And I must congratulate those who have actually, and Sandeep ji and the International Culture Center, as well as Sharda University, for choosing this title. Because the problem is with the word colonial. But this is my own submission as a professor in a university who teaches culture studies, is this that we've been fixated with colonialism. So, ever since independence, ever since Macaulay, there was not a movement that was against Macaulay, a social movement, of course. There's a different reason for this. Don't have time for this. Or post-independence. So we continually repeat that that the colonizers did this, colonizers took away our lands. The Kenyan writer who very recently died, and he's a novel, of course, in which he says that there is, of course, a scene in the church, and it said that the father said, "Close your eyes and think about God." And he said, when we open our eyes, our lands are gone. Now, these are important socio-political realities, but the point is this, that this all is fixated on colonialism. There is a Native American writer, I'll just make some references, Native American writer called Thomas King, a very powerful writer. He has a citizenship of both Canada and the United States. And by way of departure, I mentioned there are connections, of course, that when the French and the British in the 16th century they went to North America, they destroyed 50 million people, 15 million people they destroyed, and they destroyed 15 million people they destroyed, and they destroyed 50 languages, and a language like the Bothi people, the last survivor was a woman, of course, in 1821. So they did away with the language. Not only that, bisons, of course, bisons are animals that resemble the cow and the buffalo. They killed lakhs of bisons. In fact, in one of the memories of a Native American leader, who would say that the thousands of dead bodies of the bisons would lie abandoned, because, of course, clearing is very important for the settlers, of course, to establish themselves in North America. The cultural reality of North America, or the Native America, or Native Canada, how similar it was with our traditions, the understanding of what language is, what sounds is, what is reality, the animal world, the human world, and the world of the spirit, the relationship. All these were, of course, devastated. The importance of the folk singers, the shamans, for instance, the idea that you could actually create a mask on a tree bark, and that mask, carved on the tree bark, was a connection between the human world and the world of the gods. What I'm trying to say is this, that a tradition of indigenous knowledge, of indigenous practices, social, economic, cultural, not to be understood in languages and constructs which were colonial, existed. Thomas King, in this essay called Godzilla versus the Post-Colonial. Now, post-colonialism is a big trick, of course, imposed by the Western academia on all colonies, of course, including erstwhile colonies, including us. A greater importance in English studies, culture studies, language studies has been on post-coloniality or post-colonialism. When the colonizers left, when the British left, or the French left, or the Spanish left, or the Portuguese left, discourse of post-colonialism established in America and the European academies,
of how to study the erstwhile colonized society. Terms were created. English is not simply a means of communication that I'm speaking now. It is also a language that gives categories, categories that are related, categories that are distinct. For instance, give you just one example of a category: myth versus history. There is no language, Indian language, which has an equivalent term called myth. It doesn't exist in India, but since independent and great historians like Romila Thapar, they have taught us that what is myth and what is history. And it all comes from language. So language that has that post-colonialism has done that kind of a damage. Now, in that essay, I'll just end with this and a few initiatives that I would like to talk about where we can integrate and kind of do future work. Thomas King, a great writer, a Native American writer, Native Canadian writer, writes an essay called Godzilla versus Post-Colonialism. Godzilla versus the Post-Colonial. He says that while I am not a post-colonial theorist, I don't understand much of the post-colonial critical method. But since I am a native Canadian, I just have to say one thing, which is this: that when I was a student in school, of course, I was quite tall, much taller than many of my schoolmates. And to my teacher, who was a basketball coach, he came and told me that you will be a great basketball player because you're tall and you're heavy and you're quite strong. He said, well, I believed in what the teacher said, and I also thought that I'd be a great basketball player. But the problem was that in my mind, I could never resolve how can you run and hit the ball at the same time. I could never resolve. And therefore, I was a terrible basketball player. But my teacher insisted, because I had greater height, he said that your height will be a great advantage to the school team, till the time that I broke my knee and I was considered unfit to play in the second season. He said there was the assumption that the teacher made that I was native, I looked black, I was tall, I was strong, so I could be a great basketball player. He said that's the assumption that post-colonialism makes. It makes an assumption that post-colonialism will rid the problem. It will not rid the problem. And then he says that the terms that we natives would like to use is, of course, tribal, interfusional, and associational. These are three terms. He uses polemical in a different context. Tribal, because we have a distinct, is it not distinct, but we have a living cultural, social, economic, spiritual, philosophical systems of living and living practices that continues. The moment you say that we are doing post-colonialism, then the whole fixation is on what the Europeans did to us, what the settlers did to us. Our history, therefore, our sociology begins and ends with Europeans' references. And therefore, he said, I will not like to use these references. And that is why the title is important: Undoing Colonial Infrastructure. I think it's great time, of course, with lots of initiatives that the government has taken, under the great leadership of the Prime Minister and the Honorable Minister of Parliamentary Affairs, that it's a high time that we should talk about our traditions, traditions that connect, of course, with other people across the world, traditions which do not make the basic fundamental philosophical position which Enlightenment imposed on all of us, was that reason and imagination, fact and feeling, and logic and common sense were different. And that's where it started the idea that there could be one linear path of progress through modernization, of course, through science, till the time in 1917 and 80s when UNESCO realized that I think there's a problem, therefore let us talk about sustainability. In 1970s and 80s, where UNESCO with the Research Council of Germany gave a project to understand what is sustainability, and sustainability is a high frequency word today. The sustainable development, because you have destroyed most of the world, and therefore there's an imposition on the countries who lag behind. Don't industrialize because it will, of course, pollute the environment. And we are custodians of ecological sensitive people sitting in the global north. But native Canada, native America is the global north. This whole divide of global north and global south is also therefore problematic. We were always sustainable. In the Upanishads, of course, Taittiriya Upanishad, the self is same in elephant, the same self is an elephant, the same self
is in the end. All tribal communities, sustainability is not something new. For centuries, they've been living sustainable lives. And therefore, even UNESCO recognizes that we need to look at, learn from indigenous communities. These conferences are important not because, and this is some point, a very limited point I made on a proposal for the nomadic tribes, of course, that this knowledge is important for the indigenous communities, it's important for the Janjatiya communities, but it is more important for a world which has left behind sustainability long time back, obviously. And therefore at ICSSR, I'll end with that point, at ICSSR, when we talk about decolonizing research methodology in the social and human sciences, on the one hand, we talk about the concepts, of course, the great Pramana traditions, of course, the conceptual heritage that comes from our great texts, whether the Smritis and the Shrutis, and of course, the living social cultural practices of the Janjatiya communities. After all, you can never say, that the living practices, of course, the folk practices, the songs, or the way societies have been living, they do not have ideas and reason and, of course, concepts, and they just go on living. So when we talk of decolonizing, of course, which of course undoing colonial legacies, of course, in social and human sciences, and of course also in natural sciences, obviously, because we are in a phase of interdisciplinarity. ICSR prioritizes interdisciplinarity. There are two things that we must do. We need to study our text and get our paradigms from our great text or languages, especially in the era of artificial intelligence. The language is going to be very important. On the other hand, we need to go to the societies, of course, and study the societies, the tribal societies, and there's enough to learn. Of course, I don't have time from here, right from health to women empowerment, name anything in the 17 SDG Sustainable Development Goals, and they have supported research on tribal studies in all 17 SDGs. I don't have time for that today, but thank you so much. It's been a great opportunity and personally an extremely memorable day and moment for me to be sharing. And I must end with my teacher, Joram Begisa. I remember he was a registrar when I was a student, and he said one thing in that auditorium which was newly built. He said that if you have to have great aims in life, you need to have a greater potential to do hard work, and need to have greater commitment. If you do not have greater commitment and greater zeal to do hard work, don't have great ambitions. To hundreds of students like me sitting there. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for sharing your knowledge. I agree with you that now the time has come that we need to be vociferous enough about a country that is and all the unfathomable things, and then we have to speak a lot. Thank you so very much for sharing your thoughts with us. Now, without taking much of time, I would like to take an opportunity to call our Honorable Minister to address us. Thank you. Dr. Dhananjay Singh ji, Dr. Shashi Balaji, Dr. Amarjeet Lotan ji, and the person who has given such a fantastic infrastructure to us, Dr. Pradeep Kumar Gupta ji, Professor Balram Singh ji, who had joined us online from United States, Dr. Anviti Gupta ji, Sri Shyam ji, Dr. Nitin Agarwal ji, and all the learned members of the ICCS as well as the invitees who are participating in this 2 days seminar, and being organized by International Center for Cultural Studies and
Bharatiya SANSKRITI VAISHVIK KENDRA, Sharda School of Humanities and Social Sciences, Sharda University. And I think the subject which the 2 day seminar is going to deal with is extremely interesting. It is on undoing colonial infrastructure towards global indigenous resurgence. So let me be very frank, it's an interesting subject. But to undo the colonial infrastructure which has been created over the centuries, it's not an easy job. We must be very honest, it's not going to be easy. But more than that is how many people are putting their energy into the entire effort. This is where we stand special. And I have known many people who think like me, who have a very similar kind of approach towards culture and nature. And the like-minded people coming together and working together, I think it's a sign of success. But my worry is talking to people in this kind of seminar is wonderful because we are together in our effort. But my greater worry is how to address the larger people who are not part of this movement, who should be our target actually. So I will not make any kind of lengthy speech here because I rather prefer to listen and to strengthen myself in my conviction. However, when I meet the students or the common people, then I make my point loud and clear. That is where we have to create impact. Why I say this decolonization of the, the imprint, which is so deep, is going to be tough, is that they have got so deep that we will get resistance from our own people. If I go to a tribal community, if I tell them about how important to maintain your culture, your identity, the resistance will come from them only because they are already colonized. The mind is already changed and you will get a stiff resistance. In fact, you will get a kind of medicine which you don't expect. If I go to my own village thinking that I must do something good for the people, but I realize that the person I'm thinking about doing something for has changed and is trying to make me converted like him. So it's a very unique kind of situation we are living today. I have traveled wide across the globe and I've seen the evolution. Some of the examples, like when I was maybe in Mexico, the ancient civilization which they had, and today we have to go to a museum, beautiful recreational activities they have conducted, and then you see through that how their civilization was. But not a single person practices it anymore. So it's only through uh, cinematographic vision you can just feel it. That's all. Even in Europe, heart of Europe, they say that they have lost their culture. They have developed, they become modern, but they have lost their culture. So even if they want, they cannot revive it because it's no more alive. Fortunately, some of the societies like ours, like in India, and there are many societies in the world, the culture is still alive, but in the verge of this, extinction, but still alive. So it's easy for such people to make their culture revive again, make it more vibrant, and then the so-called beautiful indigenous culture, which makes this world much more beautiful, should remain alive forever.
culture and nature, something very similar. It takes time to build. So over ages, millennium it takes to build, but it takes few moments to destroy it. So both nature and both culture, it's very similar. So when I had gone to see the Maori culture in New Zealand, they are proud of their culture, but at the same time they have lost their faith. So they are all Christian. But then they are again feeling proud about their Polynesian background. So I was wondering, if you have lost your faith, if you have lost your belief system, what is there remaining to be proud of about a particular culture? You so proudly say that I belong to this culture. In India, we have many deficiencies. Sometimes I feel like pointing out only the deficiencies so that we don't create this kind of vacuum and misjudge and then lose ourselves. But again, then it becomes too much of negative to talk about deficiencies and shortcomings. But we have serious deficiencies. No, you must be wondering why. See, there are few civilizations in the world which are very deep, which are ancient, and India is one of them. So I can divide the world into broadly three categories. One is ancient civilization, but adopted an alien culture or inclined towards alien culture. There are some societies which are not ancient, but they have kept themselves alive. And there are some who have completely surrendered to the alien culture, thinking that that is superior culture. Today, India is the only ancient nation whose progress technically is based on alien education system. You are sending your rockets to the space through English language, English education, your IITs, IIM, everything English. We are speaking English. Other than India, no other country, even South Koreans are launching their satellite, they are doing in Korean. If Japanese are progressing, they are doing in Japanese. The Russians are in Russian. The Chinese are progressing based on their Chinese language. We are the only country which is totally moving forward based on an alien language, alien infrastructure. So we keep talking about using our mother tongue, maintaining our language. We keep talking about it. As a leader, also as a layman, everybody does that. So if you see seriously, you're putting so much effort to protect your mother tongue. But these countries, they are putting effort to learn others' culture. Because learning your own mother tongue, your own language, need not put any effort because that should be natural. But here in India, we have to really stress so much that अपना भाषा, मातृभाषा को बोलना जरूरी है. ये हमको बोलते रहना पड़ता है. तो हमारा लड़ाई उल्टा है. हमारा मातृभाषा को बचाने का लड़ाई है. लेकिन दूसरे देश में दूसरा भाषा सीखने के लिए जोर देना पड़ता है. क्योंकि मातृभाषा को बचाने के लिए जोर देने का आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए. ये वास्तविकता होना चाहिए. लेकिन हमको तो बहुत मेहनत करना पड़ता है अपना मातृभाषा बचाने के लिए. ये सब कई, अब मैं लंबा तो नहीं बोलूंगा, कारण है इसमें भी, मेरा अपना असेसमेंट है. ऐसा हमारा जो मानसिकता, मेंटेलिटी हो गया, जिसकी वजह से हम 1000 साल तक गुलामी में रहे हैं. अलग अलग समय में, दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगलों से लेकर के अंग्रेजों तक. क्योंकि ये हम कमजोर है बोल के नहीं है, लेकिन हमारा एक विशेष हमारा मानसिकता है जिसकी वजह से हम कॉलोनाइज हो जाते हैं. आज हम देश तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी तो प्रॉब्लम तो जो मैंने बोला है, ये तो नरेंद्र मोदी जी आने का बाद हम बाहर जाकर के भी सीधा तान के हम हिंदी बोल सकते हैं, मातृभाषा बोल सकते हैं. नहीं तो
वो कैसे अंग्रेजी में बोलना है और हमारे विदेशी को कैसे खुश कराना है, हम तो उसी में व्यस्त रहता है। तो इसलिए ये जो मानसिकता का वजह से हमारा जो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपना जो वजूद जो खो रहे हैं, इसको एक तरीके से ये जो आज का सेमिनार है इसमें थोड़ा सा इसमें आप चर्चा कर सकते हैं कि merely talking about importance of maintaining your own identity and culture is not enough. तो उसके कारण क्या है, उस तक जब तक नहीं जाएगा तो हम अपना कामयाब प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। मैं जब रोइंग में गया था वो रिवाज का इनॉग्रेशन में, तब भी मैं सोच रहा था यार रिसर्च इंस्टीट्यूट तो खोल दिया है, ऐसा ना हो कि यहाँ रिसर्च करने वाला पढ़ाने वाला सिर्फ उसी में सीमित ना रह जाए। सक्सेस तो कब होता है जब आपसे बाहर के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, नहीं तो हम अपने में ही कंफर्ट जोन में है, हम कंटेंटेड हो जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, पर आसपास पूरा बदल चुके हैं, हमको ये आइडिया अंदाज ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एफर्ट है, आईसीसीएस का एफर्ट को मैं मामूली नहीं मानता। इसलिए that's why I said that anything which is difficult is challenging, and to do that is a great effort you require, and I feel that though it is not easy job, but then it is a great effort, and we must put our entire energy and efforts together. हमारे जैसे विवेकानंद केंद्र में भी काफी संगठन है जो इस लाइन में सोच के काम करते हैं। सेम है, मैंने कई अटेंड किए हैं, विवेकानंद का कार्यक्रम में भी अटेंड किए हैं, उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस देश में ऐसा सोचने वाला 5% से भी कम रह गया है। और दुख की बात है, जो अपने परिवार में संघ से जितने भी जुड़े हुए हैं, इसमें आप लोग को तो मालूम होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं उसको तो बोलने का जरूरत नहीं है, और उससे जो तालमेल लगता है उन लोगों को भी मालूम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा सोचने वाला का संख्या इतना कम है हमारा देश में। अपने आप में संख्या बड़ा है, मैं प्रतिशत का बात कर रहा हूँ। हमारा देश का जनसंख्या इतना ज्यादा है कि अगर 145 करोड़ पॉपुलेशन है, तो अगर हम 5% है तो भी 7.5 करोड़ हो जाता है, तो एक यूरोप का बड़ा देश का बराबर हमारी जनसंख्या हो जाता है। लेकिन प्रतिशत में, परसेंटेज में तो कम है। तो ये सोचने वाला, हमारे जैसे सोचने वाला का प्रतिशत कम है, जनसंख्या में कम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब हम अपने आप को, जो डिफिशियंसी का मैं बात करता हूं, वो समझ में नहीं आने की वजह से हम अपने आप का सेलिब्रेशन कर नहीं सकते, दूसरा का सेलिब्रेशन बहुत करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे हम लोग दिल्ली का देश का राजधानी है, दिल्ली में किसी एक को हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर सम्मानित करेंगे, अगर उसको अवार्ड देता है, तो दिल्ली के लोग उसको पता ही नहीं होता कि दिल्ली के किसी को अरुणाचल में अवार्ड दिया है। मगर अरुणाचल के एक बच्चे को अगर दिल्ली में अवार्ड दे देता है तो वो अरुणाचल में हेडलाइन बन जाता है कि हमारा बच्चा को देखो राजधानी में उसको ऑनर किया गया है। वो एक मेंटालिटी का बात है, सोच का बात है। उसी प्रकार से अब दुनिया नोबेल प्राइज के बारे में बात करते हैं। नोबेल क्या होता है? नॉर्वे जिसका जनसंख्या 30 लाख है, दिल्ली का एक छोटा कॉलोनी जो है उसका जनसंख्या नॉर्वे, और वो एक देश नोबेल प्राइज देता है। यहां नोबेल के लिए फॉरवर्ड नाम हो जाता है तो भी 10 दिन हेडलाइन में चलता है। अगर नोबेल प्राइज मिल गया तो फिर वो तो अलग स्तर का इंसान बन जाता है। ये कैसे कैसे हो सकता है बताइए? छोटा सा देश एक अवार्ड दे रहे हैं, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन का कोई पैमाना नहीं है। हमने हर साल देखते हैं, यहाँ हमारा भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं, विदेशी को भी बुला के हम लोग अवार्ड देते रहते हैं। ना हमको मालूम है, ना जिसको अवार्ड दिया उस देश के लोग जानते हैं। लेकिन किसी इंडियन फिल्म को अगर ऑस्कर पे नॉमिनेशन हो गया
तो यहाँ बैंड बाजा बजा करके इसका इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है कि अवार्ड दे करके लोग भूल गए, हमारा सेलिब्रेशन खत्म होता ही नहीं। इतना तवज्जो देते हैं हम कि अमेरिका को एक फिल्म इंडस्ट्री है हॉलीवुड में, मतलब कोई मैगजीन से अवार्ड दे दिया। आजकल तो मैं तो इतना वैल्यू देता नहीं, ये सब अवार्ड हमारे जो लेफ्ट जो ग्रुप है, जो जो इस देश का प्रोग्रेस का खिलाफ हमेशा उसका मेंटेलिटी रहता है, वो उसको गाली दे दे के अवार्ड लेता है विदेश में जाकर। वो अपने देश को गाली देता है इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये सब करके, और खूब अवार्ड लेते हैं। वो तो खुश है विदेश में, तो हमारा भारत के विरोध सोचने वाला का कोई कमी तो है नहीं। वो लोग ऐसे ऐसे वाला ढूंढ के अवार्ड देते हैं जो भारत का तरक्की को रोकने के लिए खूब मेहनत करते हैं, और उन लोगों को हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बुला करके इज्जत दिया जाता है। ऐसे लोगों को मतलब खुद अवार्ड दिलाते हैं बाहर जाकर के, और उसको यहाँ खूब सम्मान दिया जाता है हमारे देश में। ये मेंटेलिटी में तो कई बार कहा हूं कि अगर हमको 1000 साल गुलामी में रखा है तो ये ऐसा नहीं है कि हम कमजोर थे, फिजी के लिए कल्चर कमजोर नहीं थे, लेकिन हमारा सोच में कहीं न कहीं इतना कमियां थी। सोचने वाला इस तरह के लोग का संख्या कम नहीं है, नहीं तो कैसे कोई छोटा सा टोली आकर काम को कब्जा करके हमको कॉलोनाइज कर देते। छोटा छोटा आप हिस्ट्री जो पढ़ते हैं आप देखा होगा, छोटा छोटा ग्रुप आकर के हमको आराम से हुकूमत कर देते हमारे ऊपर में। तो ये जो एक लार्जर माइंडसेट प्रॉब्लम हमारा समाज में मैं जो देखता हूँ, ये मेरे लिए तो सबसे बड़ा चिंता है। प्राइम मिनिस्टर ने 2014 के बाद जो एफोर्ट किया है, मैं उसको डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोग ने तो करीब से देखा होगा, और उन्होंने रेड फोर्ट से भी इस बात को कहा है कि उन्होंने 5 प्रण जो हम लोगों को दिया है डीकोलोनाइज करने के लिए, जो एफर्ट्स, हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट और कॉलोनियल छाप जो पहचान को पूरा हमारा सोच विचार से ही खत्म करने के लिए जो 5 मंत्र दिए हैं, अगर उसको थोड़ा सा हम थोड़ा एफर्ट लगे, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाए उसमें, तो भी हम बहुत काम कर सकते हैं। तो ये सब दोनों ड्यूअल पर्पस हो जाता है। हमारा इंडिजिनस कल्चर, ट्रेडिशन, आइडेंटिटी को भी हम रिवाइव कर सकते हैं, और जो कॉलोनियल माइंडसेट को भी हम हटा सकते हैं। तो इसको हम लोग को मिला के इंटीग्रेटेड अप्रोच के तरीके से काम करना होगा, नहीं तो हम सिर्फ स्कॉलरली सिर्फ सोचेंगे तो ये समाधान नहीं हो सकता। स्कॉलरली सोचने से तो ठीक है, लिखने के लिए किताब तो ठीक है वो, लेकिन कितने लोग पढ़ेंगे उसको। और जो यूथ को उस तक पहुंचने के लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में कैसे हम इसको अपने आप को उन लोग का बीच में जा सके, क्योंकि हमारे बच्चे तो इंटरेस्ट है ही नहीं हमारे बारे में पढ़ने के लिए। वो लंदन, अमेरिका का एक एक गली के बारे में उसका नॉलेज है, अपना गांव का नाम ही नहीं मालूम है। ये हाल हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है। अभी मैंने जो देखा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्पेशल एफर्ट की वजह से बाहर में जो इंडियंस है वो अब थोड़ा प्राउडली बोलने लग गया कि हाँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, मेरा ग्रुप इंडियन है। ये जो आ रहा है, ये बहुत पॉजिटिव दृश्य हमको दिखाई देते हैं। अभी मैं विदेश जाते रहता हूँ तो मैं ये देखते रहता हूँ, अपने जो इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ओसीए का होल्डर है, उनको जब मिलता हूँ तो दे फील नाइस टू बी कनेक्टेड विद इंडिया एंड इंडियन सिविलाइजेशन। वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो ये सारा जो एफर्ट है, मैं इसलिए आपको बहुत टेक्निकल बातें मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसलिए रैंडमली थोड़ा आपको ये जो मेरा विचार को रख रहा हूँ। क्यों हमारा इतना बड़ा पुराना संस्कृति है, इतना हमारा गहरा सभ्यता है, फिर भी हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो मैंने जो हमारा जो शॉर्ट कमिंग को बताया, हमारा मेंटेलिटी में कुछ जो समस्या इश्यूज है, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो उसमें बहुत आपको कनेक्ट नजर आएगा। नहीं तो हम तो एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में तो हम बोलते रहते हैं, जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, आप तो देखा होगा संघर्ष चल रहा है, अरुणाचल में तो बड़ा संघर्ष चल रहा है आपस में, इंडिजिनियस एंड क्रिश्चियंस के बीच में बड़ा एक कन्फ्रंटेशन का स्थिति पैदा हो गया। तो हम लोग तो नेता है, सबको मिलता है, सबसे बात करता हूँ, और ये कहता है कि झगड़ा मत करो, वायलेंस ठीक नहीं।
लेकिन इतना कह करके तो आप संतुष्ट तो नहीं हो सकते, कई चीजें हैं। तो हम तो अरुणाचल वाला को कहते रहते हैं कि आप तो किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपका कल्चर जिंदा है, बाहर का इन्फ्लुएंस लेट में आया है। तो प्रॉब्लम वही है कि समझदारी, नॉलेज आने से पहले अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर आप समझा नहीं सकते हैं। और जिसका जितना रूट स्ट्रॉन्ग है उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना रूट को मजबूती नहीं किया है। तो हवा पानी जैसे वैसे कैसे मैनेज किए जा सकते हैं, बाहर से हजारों मील से बाहर से आते हैं और हमारे कल्चर को वो ले जाते हैं। और ये व्हाइट मैन का मेंटेलिटी तो आप लोग सब समझते ही है, दुनिया का ठेका लेकर रखा है उन्होंने। सबको सुधारने के लिए सबको बदलना जरूरी है क्या? कोई अच्छा चीज बोलना है तो आप बोलिए, लेकिन पहले हमारा रूट को टारगेट करते हैं, फिर अपना वजूद को खत्म कर देते हैं। बाद में तो हम चाह करके कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया का रूट तो पुराना भी है, मजबूत भी है, और मुझे तो विश्वास भी है कि हम लोग बचा सकते हैं। हम इतना हल्का से हमको कोई हटा नहीं सकते हैं। हमारे जो इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं इंडिया में, कई इंडिजिनियस ग्रुप्स जिसको हम ट्राइबल्स कहते हैं। अब जब प्रधानमंत्री जनमन योजना जो टारगेट किया, आप लोग नाम सुना होगा, ये वो वल्नरेबल छोटे छोटे जो कम्युनिटीज है, जो नोमैड भी हो सकते हैं या मतलब खत्म होने वाला है बिल्कुल। ट्राइबल भी ऐसे होगा ना, कुछ ट्राइबल ग्रुप तो पावरफुल ग्रुप है, पूरा नौकरी वोकरी कब्जा करके रखा है रिजर्वेशन, और कुछ तो ऐसे है कि पियोन तो भी नहीं बना। तो उनके लिए पीएम जनमन योजना जो लगाया है वही है इंडिजिनियस प्रिमिटिव जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडर्निटी का साथ लाना, लेकिन उसका पहचान को जीवित रखना। ये सब चीज जो है मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर का बड़ा एक बारीकी से सोचता है, तो जिसके वजह से आगे हमारा अंजाम अच्छा होगा, ये मैं मानता हूँ। आज का सेमिनार के बारे में मैं टेक्निकली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो इतने इस मामले में आप लोग जानकारी रखते हैं, तो वो तो सूरज के सामने में दिया जलाने वाला बात हो जाएगा, इसलिए मैं इस बात पे टच नहीं कर रहा हूँ। ऊपर से मुझे यहाँ बुलाया, शारदा यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरी बार है। वो अभी वाइस चांसलर साहब ने मुझे याद दिलाया, जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यक्रम हुआ था। आज दूसरी बार शारदा यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी बड़ा है, कैंपस बड़ा है, बड़ा सुंदर यहाँ सब कुछ बना है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके जो यहाँ का संस्कृति कल्चर, भारतीय सोच के साथ ये यूनिवर्सिटी चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिल्डिंग बड़ा हो जाए तो अंदर खोखला है, अगर आइडियोलॉजी ठीक नहीं है तो ऐसा यूनिवर्सिटी में आने से, और ऐसे चांसलर है जिसका मूलता भारतीय सोच के साथ इस यूनिवर्सिटी को आपने निर्माण किया है और आगे चला रहा है, तो ऐसा यूनिवर्सिटी में आज का जो टॉपिक आईसीसीएस ने जो कार्यक्रम रखा है, ये एकदम अटूट संबंध, ये आगे भी बरकरार रहना चाहिए। मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ज्यादा ज्ञान आज यहाँ नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए माफ कर देना, लेकिन मुझे आपके बीच में कुछ समय के लिए रहने का मौका मिला, उसके लिए मेरा दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी जानकारी के लिए ये बताएं कि ट्राइबल स्टडीज करके एक पेपर हमने अपने एमए पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया है सर, जैसा कि आप और धनंजय सर बोल रहे थे। तो इसी वजह से इसकी जागरूकता और बढ़ाने के लिए हम लोग पूरा स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस इस ओर प्रयासरत है, और ऐसी ही उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ ना कुछ हम प्राप्त करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। आपसे अनुरोध है कि रिलीज ऑफ बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स एंड आईजी वॉच जनरल का को रिलीज करने की कृपा करें।
Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Nitin Agrawal to give a vote of thanks. नमस्ते मीता कोय ओयासी वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा आईसीसीएस का स्लोगन है जिसको लेके हम सभी आईसीसीएस के कार्यकर्ता अपना कार्य निभाते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज और भारतीय संस्कृति वैश्विक केंद्र शारदा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के साथ मिलकर हम ये 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आईसीसीएस के पूरे जो मैंडेट है उस पर हमारे देश भर से आए जो शोधकर्ता हैं, रिसर्च ऑफिस वर्कर्स हैं, वो अपना अपना क्या उन्होंने रिसर्च करी है वो अपने पेपर्स प्रस्तुत करेंगे और उस पर अपना पूरा विचार रखेंगे। आईसीसीएस का जैसे कि मैं बहुत ब्रीफली बताऊं तो मेन जो मैंडेट है वो पूरी दुनिया में जिसको आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है इस कॉन्फ्रेंस का, शिफ्टिंग द लेंस फॉर ग्लोबल इंडिजिनस रिसर्जेंस, मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी भी जो ग्लोबल इंडिजिनस ऐसी सभ्यताएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको कैसे उनका पुनर्जागरण किया जाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली कोलोनाइजेशन की वजह से जिनका ह्रास हुआ, जिनका एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनकी समाप्ति कर दी गई। ऐसी सभ्यताएं जैसे कि अगर हम नॉर्वे में जो सामी लोग हैं या यूरोप के अंदर रोमानिया से लेकर इंग्लैंड तक जो घुमंतू जाति जिसको जिप्सीज बोलते हैं या रोमा बोलते हैं, आजकल जिप्सी कहलाना वो लोग पसंद नहीं करते, वो कहते हैं हमें रोमा कहना चाहिए। इसी तरह की मायन सभ्यता जिसके बारे में मंत्री जी ने भी चर्चा करी कि मैक्सिको से लेके ग्वाटेमाला तक, दक्षिण अमेरिका, मॉरीज एंड न्यूजीलैंड, ऐसी बहुत सारे ट्रेडिशन है। यजीदीज इराक और टर्की के अंदर जो कि अपने को बिल्कुल अलग एक ग्रुप मानते हैं, ट्रेडिशन मानते हैं। ऐसी तमाम ट्रेडिशंस को कैसे हम सपोर्ट कर सकें, कैसे उनका रिसर्जेंस कर सके और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर सकें, और हम जब देखेंगे तो कैसे भारत के सनातन पद्धति से उनका कितना मिला जुला एक तरह से उनका स्वरूप है, बिना उनको ये बताए कि हम आपको अपने से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनके रिसर्चर्स में कैसे मदद कर सकें, ऐसा काम आईसीसीएस पूरी दुनिया में कर रही है। और उसी पर अगले 2 दिन तक हम लोग अपने सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरे देश भर में शोध किया है उस पर अपना विचार रखने वाले हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग उन विचारों से जागृत होंगे। Now, on behalf of the President and the General Secretary of ICCS, I would like to thank Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Shri Kiran Rijiju ji. आपने अपना समय निकाला और बहुत हमको यहाँ पर अपने बड़े अच्छे ओजस्वी भाषण से बहुत सटीक तरीके से उन्होंने अपना विषय रखा। हम आपको एक विशेष थैंक्स भी दे सकते हैं। आप एज मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपने जो ये वक्त का कानून लाया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। I would like to thank on behalf of ICCS Professor Dhananjay Singh ji, Secretary ICSSR, and Dr. Balram ji who joined us online to give their definitely a very important aspect of on the subject that we are going to talk. एक बहुत ही विशेष थैंक्स श्री पीके गुप्ता जी, चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी। हमेशा से ही आप हमेशा तैयार रहते हैं, और ये बात आदरणीय किरण रिजिजू जी ने बिल्कुल सही बोली पीके गुप्ता जी के बारे में कि जब मैं और आदरणीय संदीप के पेविश्वर जी जब आपसे पहली बार मिलने आए और हमने ये प्रपोजल दिया कि हम आईसीसीएस का यहाँ पे एक सम्मेलन करना चाहते हैं, तो आपने तुरंत एकदम बिना 1 मिनट लगाए कहा कि हाँ यहाँ करिए, और बल्कि कुछ मंथली जो सेमिनार्स वेबिनार्स होते हैं उनको भी आप हमारे यहाँ कर सकते हैं। एंड इवन ही प्रपोज की 2030 में जो आईसीसीएस की जो आपकी जो एल्डर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है, त्रिवार्षिक कॉन्फ्रेंस होती है, उसको भी आप शारदा यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। तो प्रदीप गुप्ता जी का और उनके साथ साथ डॉक्टर अवनीति गुप्ता जी जो कि डीन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज हैं, थैंक यू मैडम फॉर योर ऑलवेज फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी फॉर यू एंड फॉर योर टीम। It's been a really very honor for all of us, for our कार्यकर्ता। आपकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, और कल शाम समोसे बहुत अच्छे थे।
सभी को बहुत अच्छे लगे. So thank you so much for that. Yes, and I thank all the delegates of ICCS from all 13 chapters of India. पूरे भारत से सभी 13 चैप्टर से आए ICCS के सभी डेलीगेट्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. विशेषकर हमारे रीवॉच सेंटर रोइंग से अरुणाचल प्रदेश से आए जो पूरे डेलीगेट्स हैं उनका विशेष स्वागत. मेरे को भी वहां पे जाने का सौभाग्य मिला है तो उसके काम के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद. And last but not the least, विशेष धन्यवाद, special thanks to आदरणीय श्री श्याम परांडे जी, सेवा इंटरनेशनल, और श्री संदीप काविश्वर जी फ्रॉम ICCS, संगठन मंत्री हैं हमारे. उनका विशेष धन्यवाद लगातार for your guidance, for all the support to ICS and to all the कार्यकर्ताs. So thank you so much for all the guests and dignitaries for joining today's program. And let's make this mandate of ICCS